Hello students, we were discussing chapter the fundamental unit of life. Till now we have read about the nucleus, the plasma membrane, the cell and the basic structure of the cell. If you are considering the basic structure for the cell, consider it. We have the outer layer which is called the plasma membrane. We have the nucleus with the nuclear membrane. And now we are going to discuss what lies between these, the plasma membrane and the nuclear membrane, what lies inside this and what is its function. What is inside it, what are its function, we will discuss in this video. So here lies what you call the cytoplasm. Cytoplasm is basically a gel-like granule structure present between the plasma membrane and the nuclear membrane. It consists of two things. Firstly, the cytosol. Secondly, the cell organelle. So स्टूडेंट्स क्या होता है, साइटोप्लाज्म आपका बेसिकली टू थिंग से बना हुआ होता है. फर्स्ट इज द साइटोसोल, सेकेंड सेल ऑर्गेनेल्स. व्हाट इज साइटोसोल? साइटोसोल इज बेसिकली अ विस्सियस लिक्विड, होमोजीनियस विस्सियस लिक्विड. इट मीन्स जो भी इसमें डिसॉल्व होता है वो होमोजीनियसली डिसॉल्व होता है, मीन्स सब जगह एक सा होता है. सेकेंडली जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, आपका मूविंग लिक्विड, जिसमें क्या होते हैं आपके वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड. ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इनसाइड दिस साइटोसोल. सो cytoplasm is basically the cytosol and the cell organelles. These together form what we call the cytoplasm. Students, so what is the function of the cytoplasm? Cytoplasm basically perform the two functions. First is the transportation of the material inside the cell from here to here. What will transport? This cytoplasm will transport. Second function is to synthesize some things, like we have synthesis of protein, lipids, all is done by what we call the cytoplasm. So now we will discuss about the cell organelle, and in the full chapter upcoming all the lectures we will discuss all the cell organelles one by one. So students, we will discuss now about the cell organelle. Students, you know about the cell organelle. Something before we have discussed about. If you remember, I have told you when I was explaining the nucleus, I have taken a name, the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Short form is the E. So what is this endoplasmic reticulum? It is an interconnected membrane inside the cell which consists of three different portions, and the three different portions make together the endoplasmic reticulum. They are your cisternae, your vesicles, and last is the tubules. The cisternae have a structure like some sort of this type of structure.
while the vesicles look like this and the tubule have a regular structure like this. Okay, so in these forms the endoplasmic reticulum lie. The endoplasmic reticulum have various functions and have various types. The endoplasmic reticulum when seen under the microscope, जब हम लोगों ने इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा बेटा, तो वहां पे हमको दो तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दिए। एक जिसका सरफेस स्मूथ था, दूसरा जिसका सरफेस रफ था। द फर्स्ट यू फाइंड इट the rough one, and secondly you find it the smooth one. The rough one is called rough endoplasmic reticulum, while the smooth one is called smooth endoplasmic reticulum. This is rough endoplasmic reticulum, and what you call it the smooth endoplasmic reticulum. The rough endoplasmic reticulum is rough because of the presence of ribosomes on its surface. क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इनमें क्या होता है, इनके सरफेस पर आपके राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये राइबोसोम्स इनको रफ व्यू देते हैं। कैसे लगते हैं फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तब वो कैसा लगने लगता है, रफ लगने लगता है। राइट, कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जहां पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो हो गया डिफरेंस इनके बीच का ये कि इनमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इनमें राइबोसोम्स अटैच नहीं। दूसरा डिफरेंस स्टूडेंट्स होता है इनके सिक्रीशन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या सिक्रीट करता है आपका, दैट सिक्रीट्स द प्रोटीन, व्हाइल दैट जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट सिक्रीट्स द लिपिड। ओके, so this is another difference between the RER and the SER. You have read about the endoplasmic reticulum. It is a membranous network inside the cell. These are basically of two types, RER and SER. Now we will discuss about what is the functions of endoplasmic reticulum. So the very first function of the endoplasmic reticulum is to provide support. The endoplasmic reticulum provides the skeletal support to the cell. If you consider the structure of the cell, you have the nucleus and then lies these endoplasmic reticulum, membranous like structure. These help to give an internal support to the cell. Okay, skeletal. So the first is provide skeletal support. Second is the transfer of material, means the transfer. The endoplasmic reticulum is responsible for the inter and intracellular transfer of the material. Suppose the nucleus wants something, so what will transfer? The endoplasmic reticulum will collect it from inside the cell, the material which the nucleus needed, and it provide to the cell. So basically they transfer the material. The third important use is protein synthesis. These and rough endoplasmic reticulum synthesize the protein. So does the endoplasmic reticulum. ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. The fourth one is they provide the fourth use is they provide surface
provide surface for the synthesis of the other materials like your what we call your glycolipids, phospholipids. So these all are synthesized on the surface of the endoplasmic reticulum. Okay, students. The next important use is packaging. What we call the packaging. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि जो भी ये सिंथेसाइज करते हैं ये ट्रांसफर होता है ल्यूमन में, जहां पे ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बदल दिए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं बाय अनदर सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड द गोल्जी apparatus. What you call it? Packaging in the case of Golgi apparatus. This is another cell organelle. Students, write this name Golgi apparatus. We will discuss it in the next video. The next important use is the very important use is the membrane biogenesis. What is it? आप लोगों ने RER के केस में पढ़ा, वो क्या देते हैं? प्रोटीन्स. आपने SCR का पढ़ा, वो क्या देते हैं? लिपिड्स. आपने एक और चीज पढ़ी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिक्रीट करते हैं? फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. अगर आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद होगा तो आपको उसमें याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव. It have the structure like the sea of the lipids in which the protein iceberg were floating. Similar goes here. The lipids and the protein which is required to synthesize the membrane, the plasma membrane, are provided by the endoplasmic reticulum. So that the membrane can form, and this, the formation of membrane, is called the membrane biogenesis. मीन्स जो भी आपके प्रोटीन्स और लिपिड्स सेक्रीट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं क्या बनाने में? आपको मेम्ब्रेन बनाने में, जो आपका क्या कहलाता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट यूज इज डिटॉक्सिफिकेशन. आप लोग अगर कभी भी इनके यूजेस आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, यू हैव टू राइट द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एंड सेकेंडली द डिटॉक्सिफिकेशन. स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ सेल्स में क्या होते हैं, आपके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव एन स्पेशल प्रॉपर्टी to detoxify this materials. ये आपके लिवर सेल्स में होते हैं. इनका काम क्या होता है? अगर कहीं पे भी कुछ ऐसा मटेरियल है जो पॉइजनस है तो ये क्या करते हैं? उसको ब्रेक डाउन करते हैं into the non-poisonous substances inside the body. So this are the functions of the endoplasmic reticulum. In the upcoming video we will discuss about the Golgi apparatus. Thank you, students.